मैं आमिर हफीज़ मलिक हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आमिर हफीज़ स्मार्ट आइडियाज़। आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही दिलचस्प है, कंडीशनल सेंटेंसेस विदाउट इफ़, यानी क्या इफ़ के बगैर भी शर्तिया जुमले बन सकते हैं या नहीं। आज की वीडियो में ख़ास तौर पर उन तमाम तलबा व तालिबात और असातिज़ा कराम, लैंग्वेज लर्नर्स की फरमाइश पर बनाने जा रहा हूँ जो अक्सर ये सवाल पूछा करते थे कि क्या इफ़ के बगैर भी कंडीशनल सेंटेंसेस बन सकते हैं या नहीं। तो अच्छी खासी रिसर्च करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं जो आज की वीडियो में बना रहा हूं कि जी हां, 10 तरह के कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, 10 किस्म के कंडीशनल सेंटेंसेस हैं जो कि इफ़ के बगैर बनाए जा सकते हैं। शर्तिया जुमले इफ़ के बगैर भी हो सकते हैं और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आज की वीडियो का टॉपिक है 10 कंडीशनल सेंटेंसेस विदाउट इफ़ के बगैर 10 किस्म के शर्तिया जुमले। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि वो कौन से सेंटेंसेस हैं जो इफ के बगैर भी कंडीशनल कहला सकते हैं। नंबर 1, प्रोवाइडेड या प्रोवाइडिंग दैट। नंबर 2, सपोजिंग या सपोज दैट। नंबर 3, एज लॉन्ग एज। नंबर 4, ऑन द कंडीशन दैट। नंबर 5, सो लॉन्ग एज इमेजिन दैट। नंबर 6, अनलेस। नंबर 7, हैड वुड हैव। Number 8, whether or not. Number 9, in case या in case of. और नंबर 10, otherwise। तो आइए अब इन जुमलों की डिटेल्स देखते हैं, एग्जाम्पल के साथ इन जुमलों को देखते हैं। पहला, नंबर 1, प्रोवाइडेड या प्रोवाइडिंग दैट। तो कंडीशनल जुमला इफ के बगैर प्रोवाइडेड दैट या प्रोवाइडिंग दैट इस्तेमाल करके भी बनाया जा सकता है। सेंटेंस एग्जांपल देखिए, प्रोवाइडेड दैट योर कार इज ओल्ड विल यू लाइक टू सेल। प्रोवाइडिंग दैट योर कार इज ओल्ड विल यू लाइक टू सेल। नंबर 2, सपोजिंग दैट या सपोज दैट। आइए सेंटेंस एग्जांपल देखते हैं। सपोजिंग दैट यू हैव मनी वुड यू इन्वेस्ट मोर इन बिजनेस। सपोज दैट यू हैव मनी वुड यू इन्वेस्ट मोर इन बिजनेस। नंबर 3, एज लॉन्ग एज। सेंटेंस एग्जांपल्स देखते हैं। एज लॉन्ग एज यू टेक रेस्ट यू विल फील बेटर। नंबर 4, on the condition that। sentence example है, on the condition that you have the receipt the money will be returned। Number 5, so long as, imagine that, so long as the weather stays good they should have a good day's trip। imagine that the weather stays good they should have a good day's trip। Number 6, unless। sentence example देखिए, unless you apply you cannot get the job। Number 7, had and would have। sentence example देखिए, had you invited him he would have joined the party। Number 8, whether or not। sentence example देखिए, she goes shopping today whether you go with her or not। Number 9, in case या in case of। sentence example देखते हैं, he will forgive you in case you apologize। he will forgive you in case of apologizing। Number 10, otherwise। सेंटेंस एग्जाम्पल देखिए, डोंट फॉरगेट टू शो योर ID कार्ड अदरवाइज यू विल नॉट बी अलाउड टू एंटर। ये 10 किस्म के जुमले थे जो कि कंडीशनल सेंटेंसेस बन सकते हैं और इनमें अगर हम इफ़ का इस्तेमाल ना भी करें तो शर्त अपनी जगह मौजूद रहती है। मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही दिलचस्प मालूमाती वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल आमिर हफीज़ स्मार्ट आइडियाज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी तमाम वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, उन्हें शेयर कीजिए। मेरे चैनल आमिर हफीज़ स्मार्ट आइडियाज़ को देखने का और मेरी वीडियोस को पसंद करने का, सराहने का, मेरी हौसला अफजाई करने का बहुत बहुत शुक्रिया।